में मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है जो भी पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके हैं, बॉर्डर इलाके पर मामले देखने को मिल रहे हैं, बीएसएफ की तैनाती है, जवाब दिया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी एक और बड़ी खबर मिल रही है पंजाब के पठानकोट फायरिंग की बात करें तो फायरिंग देखिए जो बॉर्डर एरिया लगता है जब ऐसे अटैक करने की कोशिश की जाती है कटरा में जो वैष्णो देवी मंदिर है की पहले भी ट्रेनिंग दी गई थी और सभी जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। कि जो भी पाकिस्तान के शंकर जो फायरिंग के मामले सभी जगह पर ब्लैकआउट कर दिया गया है जहां पर खतरा ज्यादा है। शंकर यहाँ पर मैं बॉर्डर से चाहूंगी एक और बड़ी खबर मिल रही है पंजाब के पठानकोट जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में आपको बता दें देखिए जो बॉर्डर एरिया लगता है जब ऐसे अटैक करने की कोशिश की जाती है तो ब्लैकआउट की पहले भी ट्रेनिंग दी गई थी और सभी जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। ब्लैकआउट किया गया है वहाँ पर भी काफी सभी जगह पर ब्लैकआउट कर दिया गया है जहाँ पर खतरा ज्यादा है या फिर जो एरिया बॉर्डर से लगते हैं। बात ध्यान में रखते हुए कि बॉर्डर से सटा हुआ इलाका शहर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर उल्लंघन कर दिया है LOC पर पाकिस्तान एक बार फिर से फायरिंग शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी ड्रोन हमला हुआ है, अखनूर राजौरी बेंडर में पाकिस्तान की फायरिंग चल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वहाँ भी ब्लैकआउट किया गया है, जैसलमेर और बाड़मेर में भी वहाँ पर भी काफी धमाके की आवाज सुनी गई है। बनी थी पाकिस्तान और भारत में और अब बताया जा रहा है कि LOC पर फायरिंग एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से शुरू कर दी गई। सीज़फायर का उल्लंघन कर दिया है और LOC पर पाकिस्तान एक बार फिर से फायरिंग हमारे जम्मू कश्मीर में जुड़ गया है। जिंदर बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, एक बार फिर से राजौरी दिखा दिया पाकिस्तान ने। थोड़ी देर पहले शांति पर सहमति और अब फिर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीज़फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया है। थोड़ी देर पहले ही सहमति बनी थी पाकिस्तान और भारत में और अब बताया जा रहा है कि LOC पर फायरिंग एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से शुरू कर दी गई है, यानी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। का उल्लंघन किया है और भारतीय तेजिंदर सोडी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए थे। तेजिंदर बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, एक बार फिर से लेकिन इससे पहले जब सीज़फायर लागू किया गया था और अब युद्ध विराम घोषित किया गया था उस वक्त ये बात कही गई थी कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसे युद्ध की शुरुआत मानी जाए। ऐसे में सेना की तरफ से क्या अभी भी सिर्फ उन ड्रोन्स पर ही जो वहां से वार किए जा रहे हैं उन्हीं को नेस्तनाबूद किया जा रहा है या फिर भारत की जो आर्मी है वो आज कोई बड़ा एक्शन ले सकती है? पूरी तरह से उसे तोड़ जवाब दे रही है जो है तेजिंदर। लेकिन इससे पहले जब सीज़फायर लागू किया गया था, युद्ध विराम घोषित किया गया था, उस वक्त ये बात कही गई थी कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसे युद्ध की शुरुआत मानी जाए। ऐसे में सेना की तरफ से क्या अभी भी सिर्फ उन ड्रोन्स पर ही जो वहां से वार किए जा रहे हैं उन्हीं को नेस्तनाबूद किया जा रहा है या फिर भारत की जो आर्मी है वो आज कोई बड़ा एक्शन ले सकती है? पीठ में छुरा गोता है, उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तरह से तैयार है हो रही है। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। क्या कुछ ड्रोन्स भी देखे गए? कहाँ में जो टूट गया तेजिंदर सोडी से, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं और ये देखिए ये लगातार मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना की तरफ से दिया ही जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने एक बार काराना हरकत शुरू कर दी। एक बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि शांति बढ़ते दोनों देश और उनकी इंटरफेरेंस के बाद ऐसा उन्होंने दावा किया। बिल्कुल, क्या कुछ ड्रोन्स भी देखे गए? कहाँ सीज़फायर टूट गया तेजन, लेकिन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान भी आप देख सकते हैं लगातार सीज़फायरिंग का उल्लंघन। देखिए ये लगातार मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना को पाक को करारा जवाब देने का आदेश दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब देने का आदेश दिया गया है। देखिए ये पहले भी स्पष्ट था कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कायराना हरकत होती है तो उसे युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और 86 घंटे तक ये फायरिंग चली थी, उसके बाद में शाम को 5 बजे ऐलान हुआ कि लगातार सीज़फायर घोषित कर दिया गया है। उसके महज 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान जवाब का आदेश दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी फायरिंग की जवाब देने का आदेश दिया गया है। देखिए पहले भी अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कायराना हरकत होती है अटैक करने की भारत की बात मानी जाएगी, भारत का मुंह तोड़ जवाब देगा। इंडियन आर्मी 86 घंटे तक
फायरिंग चली थी, उसके बाद में शाम को 5 बजे ये ऐलान हुआ कि युद्ध विराम लग गया है और घोषित कर दिया गया, लेकिन उसके महज 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन कर दिया है। जम्मू कश्मीर पहले भी निशाना बनाने से पाकिस्तान की अभी कल ही खबर ऐसी गतिविधियां देखी गई है। आप ये दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान मार गिराया गया था, लेकिन एक बार फिर से अटैक करने की ड्रोन जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जानकारी के साथ शंकर आनंद जुड़ गए। शंकर, और हम सभी 5 बजे जवाब दिया गया, ऐलान होता है कि युद्ध विराम लग गया है, सीज़फायर घोषित कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान में भी हरकतों से बात नहीं आ रहा है। बड़ी खबर आप बता रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत की गई है, भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान का चाल चरित्र चेहरा है, पाकिस्तान के द्वारा मार गिराया गया था, लेकिन एक बार फिर से वैष्णो देवी की तरफ ड्रोन जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जानकारी के साथ शंकर आनंद जुड़ गए। शंकर, शाम को 5 बजे ऐलान होता है कि युद्ध विराम लग गया है, सीज़फायर घोषित कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहा है। 4 घंटे में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत की गई है। सकता है कि पाकिस्तान ये मानने वाला नहीं है, पाकिस्तान के द्वारा बताना होगा, जिस तरह से कहा जाता है कि जिस तरह से एक सीमा पार सामने आया और सामने गया और जवानों के द्वारा इस मामले में मुझसे जवाब दिया जा रहा है। और इलाके हैं इलाके पर और फिलहाल वहाँ पर ये सब की तैनाती है के द्वारा, ये सब के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है। जो मानने वाला नहीं है उससे फायरिंग पाकिस्तान के पहले बताना पाकिस्तान का चाल चरित्र चेहरा है, इस मामले के आसपास से सीमा पार वहाँ पर फायरिंग है, जो मामला है वो देखा गया। हालांकि जवानों के द्वारा कोई मामले में जरूर जवाब दिया जा रहा है, जो भी बॉर्डर इलाके हैं, बॉर्डर इलाके पर वहाँ पर ये सब की तैनाती है, जवाब दिया जा रहा है, फायरिंग का उचित जवाब दिया जा रहा है। और जिस तरह से कहा जाता है फायरिंग की बात करें तो फायरिंग बॉर्डर एरिया लगता है, जब ऐसे अटैक करने की कोशिश की जाती है तो ब्लैकआउट की पहले भी ट्रेनिंग दी गई थी और उन सभी जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। कि जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, शंकर, फायरिंग के मामले सभी जगह पर ब्लैकआउट कर दिया गया है, जहाँ पर खतरा ज्यादा है। शंकर, एरिया पर मैं बॉर्डर से लगते एक और बड़ी खबर मिल रही है, पंजाब चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में आपको बता रहे हैं कि जो बॉर्डर एरिया लगता है, जब ऐसे अटैक करने की कोशिश की जाती है तो ब्लैकआउट की पहले भी ट्रेनिंग दी गई थी और उन सभी जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। ब्लैकआउट किया गया है, शंकर हमारे साथ जुड़े हुए थे। शंकर, पर भी काफी सभी जगह पर ब्लैकआउट कर दिया गया है, जहाँ पर खतरा ज्यादा है या फिर जो एरिया बॉर्डर से लगते हैं। बात को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर से सटा हुआ इलाका चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर उल्लंघन कर दिया है और LOC पर पाकिस्तान एक बार फिर से फायरिंग शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी ड्रोन हमला हुआ है, अखनूर राजौरी मेंढर में पाकिस्तान राजस्थान का इलाका है, खासतौर ये जैसलमेर और बाड़मेर, वहाँ भी ब्लैकआउट किया गया है। जैसलमेर और बाड़मेर में भी वहाँ पर भी काफी धमाके की आवाज सुनी गई है। सहमति बनी थी पाकिस्तान और भारत में और अब बताया जा रहा है कि LOC पर फायरिंग एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से शुरू कर दी गई। सीज़फायर का उल्लंघन कर दिया है और LOC पर पाकिस्तान एक बार फिर से फायरिंग हमारे जम्मू कश्मीर पे जुटा है। जिंदर बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, एक बार राजौरी दिखा दिया पाकिस्तान ने थोड़ी देर पहले शांति पर सहमति और अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीज़फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया है। थोड़ी देर पहले ही सहमति बनी थी पाकिस्तान और भारत में और अब बताया जा रहा है कि LOC पर फायरिंग एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से शुरू कर दी गई है, यानी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। का उल्लंघन किया है और तेजिंदर सोढ़ी हमारे सहयोगी फोन में जुड़ गए। तेजिंदर, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, एक बार फिर से दिखा दिया पहले जब सीज़फायर लागू किया गया था, युद्ध विराम घोषित किया गया था, उस वक्त ये बात कही गई थी कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसे युद्ध की शुरुआत मानी जाए। ऐसे में सेना की तरफ से क्या अभी भी सिर्फ उन ड्रोन्स पर ही जो वहां से वार किए जा रहे हैं उन्हीं को नेस्तनाबूद किया जा रहा है या फिर भारत की जो आर्मी है वो आज कोई बड़ा एक्शन ले सकती है? पूरी तरह से उसे तोड़ जवाब दे रही है। अभी
जो है तेजिंदर, लेकिन इससे पहले जब सीज फायर लागू किया गया था, युद्ध विराम घोषित किया गया था, उस वक्त ये बात कही गई थी कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसे युद्ध की शुरुआत मानी जाए। ऐसे में सेना की तरफ से क्या अभी भी सिर्फ उन ड्रोन पर ही जो वहां से वार किए जा रहे हैं उन्हीं को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, या फिर भारत की जो आर्मी है वो आज कोई बड़ा एक्शन ले सकती है? एक बार पीठ में छुरा हुआ है, उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। क्या कुछ ड्रोन्स भी देखे गए? कहाँ जो पाकिस्तान टूट गया तेजिंदर वो भी देखे गए हैं, जैसे उधमपुर, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। सांभा, बारामूला, ये देखिए, ये लगातार मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना की तरफ से तो दिया ही जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से काराना हरकत शुरू कर दी। एक बार पीठ में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि शांति बढ़ते दोनों देश और उनकी इंटरफेरेंस के बाद ऐसा उन्होंने दावा किया। क्या कुछ ड्रोन्स भी देखे गए? कहाँ टूट गया तेजिंदर, लेकिन आप देख सकते हैं कि तस्वीर भी आप देख सकते हैं, लगातार सीज फायरिंग का उल्लंघन, ये लगातार को जवाब हमारी सेना की तरफ से पाक को करारा जवाब देने का आदेश दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे, पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब देने का आदेश दिया गया है। देखिए, पहले भी स्पष्ट था कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कायराना हरकत होती है तो उसे युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और 86 घंटे तक ये फायरिंग चली थी, उसके बाद में शाम को 5 बजे ऐलान हुआ, लगातार सीज फायर घोषित कर दिया गया, लेकिन उसके महज 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान जवाब उल्लंघन है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पाकिस्तान की जवाब देने का आदेश दिया गया है। देखिए, पहले भी स्पष्ट था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कायराना हरकत होती है जिनसे अटैक करने की बात मानी जाएगी, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और 86 घंटे तक की फायरिंग चली गई, उसके बाद में शाम को 5 बजे ऐलान हुआ कि युद्ध विराम लग गया है, सीज फायर घोषित कर दिया गया, लेकिन उसके महज 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। जम्मू कश्मीर पहले भी निशाना बना कि पाकिस्तान की अभी कई गतिविधियां देखी गई है। आप ये दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान की तरफ गिराया गया था, लेकिन एक बार फिर से अटैक करने की बात जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जानकारी के साथ शंकर आनंद शंकर उन शाम को 5 पर जवाब दिया गया। ये ऐलान होता है कि युद्ध विराम लग गया है, सीज फायर घोषित कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत पहले भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान का चाल चरित्र चेहरा है कि पाकिस्तान के द्वारा मार गिराया गया था, लेकिन एक बार फिर से वैष्णोदेवी की तरफ ड्रोन जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जानकारी के साथ में शंकर आनंद जुड़ गए। शंकर, शाम को 5 बजे ये ऐलान होता है कि युद्ध विराम लग गया है, सीज फायर घोषित कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहा है। 4 घंटे में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत की गई है। कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ये मानने वाला नहीं है, पाकिस्तान के द्वारा बताना होगा। जिस तरह से कहा जाता है कि एक चाल चरित्र है, जिस तरह से हालांकि हमने एक सीमा फायर फायरिंग का सामने आया और हमने तो याचिका किया गया और उनके जवानों के द्वारा इस मामले में मुस्तैद जवाब दिया जा रहा है। और इलाके में फिलहाल वहाँ पर अब बीएसएफ के द्वारा फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, उचित जवाब दिया जा रहा है। जो मानने वाला नहीं है, करेल से फायरिंग पाकिस्तान के पहले बताना कटरा में जो सबसे बड़ी मंदिर है मामले के आसपास फायरिंग वहाँ पर का जो मामला है वो लिखा गया बल के जवानों के द्वारा। तो इस मामले में जवाब दिया जा रहा है कि जो भी बॉर्डर इलाके हैं बॉर्डर इलाके पर मामले वहाँ देखने से जुड़े ये सब की तरह जवाब दिया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी एक और बड़ी खबर मिल रही है, पंजाब के फायरिंग की बात करें तो फायरिंग देखिए जो बॉर्डर एरिया लगता है जब ऐसे अटैक करने की कोशिश की जाती है तो ब्लैकआउट की पहले भी ट्रेनिंग दी गई थी और उन सभी जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। कि जो भी पाकिस्तान हमारे साथ में जुड़े हुए थे, शंकर के मामले उन सभी जगह पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। शंकर आनंद यहाँ पर मैं आप बॉर्डर से रहूंगी, एक और बड़ी खबर मिल रही है पंजाब के इलाका जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में देखिए जो बॉर्डर एरिया लगता है जब ऐसे अटैक करने की कोशिश की जाती है तो ब्लैकआउट की पहले भी ट्रेनिंग दी गई थी और उन सभी जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। ब्लैकआउट किया गया है। शंकर आनंद हमारे साथ
और बाड़मेर में भी वहाँ पर भी काफी सभी जगह पर ब्लैकआउट कर दिया गया है जहाँ पर खतरा ज्यादा है या फिर जो एरिया बॉर्डर से लगते हैं। बात को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर से सटा हुआ इलाका चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में उल्लंघन कर दिया है और LOC पर पाकिस्तान एक बार फिर से फायरिंग शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी हमला हुआ है, अखनूर राजौरी मेंढक में पाकिस्तान की फायरिंग चल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि ब्लैकआउट किया गया है। जैसलमेर और बाड़मेर में भी वहाँ पर भी काफी धमाके की आवाज सुनी गई है। सहमति बनी थी पाकिस्तान और भारत में और अब बताया जा रहा है कि LOC पर फायरिंग एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से शुरू कर दी है, यानी कि उल्लंघन कर दिया है और LOC पर पाकिस्तान एक बार फिर से फायरिंग छोड़ी। हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए थे जिंदर, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, एक बार फिर से दिखा दिया पाकिस्तान ने। थोड़ी देर पहले शांति पर सहमति और अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीज़फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया है। थोड़ी देर पहले ही सहमति बनी थी पाकिस्तान और भारत में और अब बताया जा रहा है कि LOC पर फायरिंग एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से शुरू कर दी गई है, यानी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। सीज़फायर का उल्लंघन किया है और तेजिंदर सोडी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तेजिंदर, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, एक बार फिर से तेजिंदर, लेकिन इससे पहले जब सीज़फायर लागू किया गया था, युद्ध विराम घोषित किया गया था, उस वक्त ये बात कही गई थी कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसे युद्ध की शुरुआत मानी जाए। ऐसे में सेना की तरफ से क्या अभी भी सिर्फ उन ड्रोन्स पर ही जो वहां से वार किए जा रहे हैं उन्हीं को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, या फिर भारत की जो आर्मी है वो आज कोई बड़ा एक्शन ले सकती है? पूरी तरह से उसे तोड़ जवाब दे रही है अभी जो है तेजिंदर। लेकिन इससे पहले जब सीज़फायर लागू किया गया था, युद्ध विराम घोषित किया गया था, उस वक्त ये बात कही गई थी कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसे युद्ध की शुरुआत मानी जाए। ऐसे में सेना की तरफ से क्या अभी भी सिर्फ उन ड्रोन्स पर ही जो वहां से वार किए जा रहे हैं उन्हीं को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, या फिर भारत की जो आर्मी है वो आज कोई बड़ा एक्शन ले सकती है? एक बार पीठ में छुरा होता है, उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तरह से तैयार है और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। क्या कुछ ड्रोन्स भी देखे गए, कहाँ जो पाकिस्तान टूट गया थे वो भी देखे गए हैं, ये उधमपुर, तस्वीर भी आप देख सकते हैं बारामूला, और ये देखिए ये लगातार मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना की तरफ से तो दिया ही जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने कायराना हरकत शुरू एक बार पीठ में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि शांति बरते दोनों देश और इंटरफेरेंस के बाद ऐसा उन्होंने दावा किया। क्या कुछ ड्रोन्स भी देखे गए, कहाँ गए हैं तेजिंदर? लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीर भी आप देख सकते हैं, लगातार सीज़फायरिंग का उल्लंघन, ये लगातार जवाब हमारी सेना की तरफ से को पाक को करारा जवाब देने का आदेश दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे, पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब देने का आदेश दिया गया है। देखिए ये पहले भी स्पष्ट था कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कायराना हरकत होती है तो उसे युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और 86 घंटे तक ये फायरिंग चली थी, उसके बाद में शाम को 5 बजे ऐलान हुआ, लगातार सीज़फायर घोषित कर दिया गया, लेकिन उसके महज 4 घंटे बाद ही पाक को करारा जवाब देने का आदेश दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब देने का आदेश दिया गया है। देखिए पहले भी स्पष्ट में आपके अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कायराना हरकत होती है जिनसे अटैक करने की भारत मानी जाएगी, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और 86 घंटे तक ये फायरिंग चली, उसके बाद में दिया गया है शाम को 5 बजे ऐलान हुआ, युद्ध विराम लग गया है, सीज़फायर घोषित कर दिया गया, लेकिन उसके महज 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन कर दिया है। जम्मू कश्मीर में पहले भी निशाना बनाने की पाकिस्तान की अभी कई खबर आई थी कि देखिए गई आसपास ड्रोन देखे गए हैं, आप देख सकते हैं पाकिस्तान की तरफ मार गिराया गया था, लेकिन एक बार फिर से अटैक करने की भारत जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जानकारी के साथ शंकर आनंद उन सभी को 5 बजे दिया गया है, ये ऐलान होता है कि युद्ध विराम लग गया है, सीज़फायर घोषित कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत की गई, निशाना बनाने की कोशिश की गई। अभी कल खबर आई थी कि वैष्णो देवी के आसपास ड्रोन देखे गए हैं, मार गिराया गया था, लेकिन एक बार फिर से वैष्णो देवी की तरफ ड्रोन जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जानकारी के साथ में शंकर आनंद जुड़ गए। शंकर, शाम को 5 बजे ये ऐलान होता है कि युद्ध विराम लग गया है, सीज़फायर घोषित कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। झारखंड में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत
की गई है। कहा जा सकता है कि पाकिस्तान मानने वाला नहीं है, पाकिस्तान के रहने नहीं हो रहा है। एक बताना होगा सीमा पार फायरिंग का मामला है और याचिका किया गया और बल के जवानों के द्वारा इस मामले में मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। मसला आया सामने और बड़े इलाके हैं, बड़े इलाके पर फिलहाल वहाँ पर बीएसएफ की तैनाती है द्वारा बीएसएफ के द्वारा फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, उच्च जवाब दिया जा सकता है और पाकिस्तान कहा जाए मानने वाला नहीं है। बात करते हैं पाकिस्तान के लड़ने में पहले बताना होगा इलाके में देखा गया उसके 40 चेहरा है कटरा में मंदिर है उसके आसपास फायरिंग वहाँ पर का जो मामला है वो देखा गया बल के जवानों के द्वारा इस मामले में जवाब दिया जा रहा है कि जो भी पाकिस्तान इलाके हैं और इलाके देखने को मिल रहे हैं सबकी तैनाती है और जवाब दिया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक और बड़ी खबर मिल रही है पंजाब के पठानकोट फायरिंग की बात करें तो फायरिंग देखिए जो बॉर्डर एरिया लगता है जब ऐसे अटैक करने की कोशिश की जाती है तो ब्लैकआउट की पहले भी ट्रेनिंग दी गई थी और उन सभी जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। कि जो भी पाकिस्तान के हमारे साथ जुड़े हुए थे शंकर के मामले उन सभी जगह पर ब्लैकआउट कर दिया गया है जहां पर खतरा ज्यादा है। शंकर आनंद एरिया में आपको बॉर्डर से एक और बड़ी खबर मिल रही है पंजाब के इलाका चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में देखिए जो बॉर्डर एरिया लगता है जब ऐसे अटैक करने की कोशिश की जाती है तो ब्लैकआउट की पहले भी ट्रेनिंग दी गई थी और उन सभी जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। ब्लैकआउट किया गया है शंकर हमारे साथ जुड़े हुए थे शंकर, वहाँ पर भी काफी उन सभी जगह पर ब्लैकआउट कर दिया गया है जहाँ पर खतरा ज्यादा है या फिर जो एरिया बॉर्डर से लगते हैं। बात को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर से सटा हुआ इलाका चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में उल्लंघन कर दिया है LOC पर पाकिस्तान एक बार फिर से फायरिंग शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी ड्रोन हमला हुआ है, अखनूर राजौरी मेंढर में पाकिस्तान की इलाका है ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ब्लैकआउट किया गया है जैसलमेर और बाड़मेर में भी वहाँ पर भी काफी धमाके की आवाज सुनी गई है। सहमति बनी थी पाकिस्तान और भारत में और अब बताया जा रहा है कि LOC पर फायरिंग एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर का उल्लंघन कर दिया है और LOC पर पाकिस्तान एक बार फिर से फायरिंग छोड़ी। हमारे सहयोगी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, एक बार जोर से असलियत दिखा दी है पाकिस्तान। थोड़ी देर पहले शांति पर सहमति और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीज़फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया है। थोड़ी देर पहले ही सहमति बनी थी पाकिस्तान और भारत में और अब बताया जा रहा है कि LOC पर फायरिंग एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से शुरू कर दी गई है, यानी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। सीज़फायर का उल्लंघन किया है और तेजिंदर सोढ़ी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। तेजिंदर बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, एक बार फिर से असलियत दिखा दी है। इससे पहले जब सीज़फायर लागू किया गया था, युद्ध विराम घोषित किया गया था, उस वक्त ये बात कही गई थी कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसे युद्ध की शुरुआत मानी जाए। ऐसे में सेना की तरफ से क्या अभी भी सिर्फ उन ड्रोन्स पर ही जो वहां से वार किए जा रहे हैं उन्हीं को नेस्तनाबूद किया जा रहा है या फिर भारत की जो आर्मी है वो आज कोई बड़ा एक्शन ले सकती है? तरह से उसे मुंहतोड़ जवाब दे रही है अभी जो है तेजिंदर। लेकिन इससे पहले जब सीज़फायर लागू किया गया था, युद्ध विराम घोषित किया गया था, उस वक्त ये बात कही गई थी कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसे युद्ध की शुरुआत मानी जाए। ऐसे में सेना की तरफ से क्या अभी भी सिर्फ उन ड्रोन्स पर ही जो वहां से वार किए जा रहे हैं उन्हीं को नेस्तनाबूद किया जा रहा है या फिर भारत की जो आर्मी है वो आज कोई बड़ा एक्शन ले सकती है? एक बार पीठ में छुरा गोपा है, उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है और पाकिस्तान करारा जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल, क्या कुछ ड्रोन्स भी देखे गए? कहाँ जो पाकिस्तान टूट गया थे जिंदर सोढ़ी से, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं और ये देखिए ये लगातार मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना की तरफ से तो दिया ही जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने काराना हरकत शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि शांति बरते दोनों देश और उनकी इंटरफेरेंस के बाद ऐसा उन्होंने दावा किया। तो क्या कुछ ड्रोन्स भी देखे गए? कहाँ गए हैं? टूट गया तेजिंदर सोढ़ी, लेकिन आप देख सकते हैं
तस्वीर भी आप देख सकते हैं, लगातार सीज फायरिंग का उल्लंघन, ये लगातार जवाब हमारी सेना की तरफ बीएसएफ को पाक को करारा जवाब देने का आदेश दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब देने का आदेश दिया गया है। देखिए, ये पहले भी स्पष्ट था कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कायराना हरकत होती है तो उसे युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और 86 घंटे तक ये फायरिंग चली थी, उसके बाद में शाम को 5 बजे ऐलान हुआ लगातार सीज फायरिंग लग गया है, सीज फायर घोषित कर दिया गया, लेकिन उसके महज 4 घंटे बाद ही को पाक को करारा जवाब देने का आदेश दिया गया है। कर दिया है। खबर आपको बता रहे, पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब देने का आदेश दिया गया है। देखिए, पहले 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान से कोई भी कायराना हरकत होती है जिनसे अटैक करने की बात मानी जाएगी, भारत को हालांकि जवाब देगा। और 86 घंटे तक तैयार थी, फायरिंग चली थी, उसके बाद में जवाब दिया गया। शाम को 5 बजे ऐलान हुआ, युद्ध विराम लग गया है, सीज फायर कर दिया गया, लेकिन उसके महज 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। जम्मू कश्मीर में पहले भी निशाना बनाने की कोशिश की, अभी कई खबर आई थी रखी गई है। आप ये 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की तरफ मार गिराया गया था, लेकिन एक बार फिर से अटैक करने की तरफ ड्रोन जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में शंकर आ रही है। शंकर, उन सभी को 5 जवाब दिया गया है। ये ऐलान होता है कि युद्ध विराम लग गया है, सीज फायर घोषित कर दिया गया। मंदिर के पाकिस्तान को अपनी हरकतों से दिखाई आ रहा है। 4 खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत पहले भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। अभी कल ही खबर आई थी कि वैष्णो देवी के आसपास ड्रोन लेके गए हैं, पाकिस्तान के द्वारा मार गिराया गया था, लेकिन एक बार फिर से वैष्णो देवी की तरफ ड्रोन जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ शंकर आनंद जुड़ गए। शंकर, शाम को 5 बजे ये ऐलान होता है कि युद्ध विराम लग गया है, सीज फायर घोषित कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 4 घंटे में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत की गई है। कहा जा सकता है कि पाकिस्तान मानने वाला नहीं है, पाकिस्तान को पाकिस्तान से एक बताना होगा। किसी तरह से और अमेरिका के और जवानों के द्वारा मामले में जवाब दिया जा रहा है और इलाके पर और फिलहाल पाकिस्तान के द्वारा फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, दिया जा रहा है कि मानने वाला नहीं है। बात करें पाकिस्तान को, पाकिस्तान पहले बताना होगा अभियान का उसके दे रहा है जो कटरा में सीमा पर फायरिंग का वहाँ पर फायरिंग का जो मामला है वो देखा गया, बल के जवानों के द्वारा इस मामले में जवाब दिया जा रहा है कि जो भी बड़े इलाके हैं, बड़े इलाके पर मामला देखने को मिला है कि तैनाती है, जवाब दिया जा रहा है। शंकर, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक और बड़ी खबर मिल रही है। पंजाब के फायरिंग की अगर बात करें तो फायरिंग अभी देखिए, जो बॉर्डर एरिया लगता है जब ऐसे अटैक करने की कोशिश की जाती है, वैष्णो देवी मंदिर है ब्लैकआउट की पहले भी ट्रेनिंग दी गई थी और उन सभी जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। कि जो भी पाकिस्तान के हमारे साथ जुड़े हुए थे, शंकर, के मामले पर सभी जगह पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। शंकर आनंद, यहाँ पर आपको बॉर्डर से एक और बड़ी खबर मिल रही है, पंजाब से सटा हुआ इलाका चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में देखिए जो बॉर्डर एरिया लगता है जब ऐसे अटैक करने की कोशिश की जाती है तो ब्लैकआउट की पहले भी ट्रेनिंग दी गई थी और उन सभी जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। वहाँ भी ब्लैकआउट किया गया है, हमारे साथ जुड़े हुए थे। शंकर, वहाँ पर भी उन सभी जगह पर ब्लैकआउट कर दिया गया है जहाँ पर खतरा ज्यादा है या फिर जो एरिया बॉर्डर से लगते हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर से सटा हुआ इलाका चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में उल्लंघन कर दिया है। LOC पर पाकिस्तान एक बार फिर से फायरिंग शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी ड्रोन हमला हुआ है, अखनूर राजौरी बेल्डर में पाकिस्तान की फायरिंग चल रही है। ये जैसलमेर और बाड़मेर वहाँ भी ब्लैकआउट किया गया है। जैसलमेर और बाड़मेर में भी वहाँ पर भी काफी धमाके की आवाज सुनी गई है। उसके बाद बाड़मेर में जिस तरह के ड्रोन वहाँ पे देखे गए, इस बात को ध्यान में रखते हुए सीज फायर का यानी कि उल्लंघन कर दिया है और LOC पर पाकिस्तान एक बार फिर से फायरिंग सोडी हमारे सहयोगी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, एक बार फिर से दिखा दिया पाकिस्तान ने। थोड़ी देर पहले शांति पर सहमति और अभी खबर आपको बता रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया है। थोड़ी देर पहले ही सहमति बनी थी पाकिस्तान और भारत में
और अब बताया जा रहा है कि LOC पर फायरिंग एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से शुरू कर दी गई है, यानी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। सीज़फायर का उल्लंघन किया है। तेजिंदर सोडी हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़ गए। तेजिंदर, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, एक बार फिर से असलियत दिखा दी है पाकिस्तान। इससे पहले जब सीज़फायर लागू किया गया था, युद्ध विराम घोषित किया गया था, उस वक्त ये बात कही गई थी कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसे युद्ध की शुरुआत मानी जाए। ऐसे में सेना की तरफ से क्या अभी भी सिर्फ उन ड्रोन्स पर ही जो वहां से वार किए जा रहे हैं उन्हीं को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, या फिर भारत की जो आर्मी है वो आज कोई बड़ा एक्शन ले सकती है? अभी जो है तेजिंदर, लेकिन इससे पहले जब सीज़फायर लागू किया गया था, युद्ध विराम घोषित किया गया था, उस वक्त ये बात कही गई थी कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसे युद्ध की शुरुआत मानी जाए। ऐसे में सेना की तरफ से क्या अभी भी सिर्फ उन ड्रोन्स पर ही जो वहां से वार किए जा रहे हैं उन्हीं को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, या फिर भारत की जो आर्मी है वो आज कोई बड़ा एक्शन ले सकती है? एक बार पीठ में छुरा गोपा है, उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पाकिस्तान करारा जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल, क्या कुछ ड्रोन्स भी देखे गए? कहाँ जो पाकिस्तान टूट गया तेजिंदर सोडी से, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये लगातार मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना की तरफ से तो दिया ही जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने काराना हरकत शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि शांति बढ़ते दोनों देश और इंटरफेरेंस के बाद ऐसा उन्होंने दावा किया। क्या कुछ ड्रोन्स भी देखे गए? कहाँ गए हैं? टूट गया तेजिंदर सोडी, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीर भी आप देख की तरफ से लगातार सीज़फायर का उल्लंघन, ये लगातार जवाब हमारी सेना की तरफ से बीएसएफ को पाक को करारा जवाब देने का आदेश दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे, पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब देने का आदेश दिया गया है। देखिए, पहले भी स्पष्ट था कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कायराना हरकत होती है तो उसे युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और 86 घंटे तक ये फायरिंग चली थी, उसके बाद में शाम को 5 बजे ऐलान हुआ, लगातार युद्ध विराम लग गया है, सीज़फायर घोषित कर दिया गया, लेकिन उसके महज 4 घंटे बाद ही पाक को करारा जवाब देने का आदेश दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब देने का आदेश दिया गया है। देखिए, पहले भी 2 तस्वीरों में अगर आप पाकिस्तान की कोई भी कायराना हरकत होती है जिनसे अटैक करने की बात मानी जाएगी, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और 86 घंटे तक तैयार थी, फायरिंग चली थी, उसके बाद में जवाब दिया गया। शाम को 5 बजे ऐलान हुआ, युद्ध विराम लग गया है, सीज़फायर घोषित कर दिया गया, लेकिन उसके महज 4 घंटे बाद ही पाकिस्तानी सीज़फायर का उल्लंघन कर दिया है। जम्मू कश्मीर में पहले ही पाकिस्तान की कई खबर आई थी, आप ये 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की तरफ से मार गिराया गया था, लेकिन एक बार फिर से अटैक करने की तरफ ड्रोन जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में शंकर आनंद जुड़ गए। शंकर, उन सभी को 5 बजे दिया गया है, ये ऐलान होता है कि युद्ध विराम लग गया है, सीज़फायर घोषित कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहा है। सारी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने कायराना पहले भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। अभी कई खबर के आसपास देखे गए हैं, पाकिस्तान को मार गिराया गया था, लेकिन एक बार फिर से की तरफ ड्रोन जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ शंकर आनंद जुड़ गए। शंकर, शाम को 5 बजे ये ऐलान होता है कि युद्ध विराम लग गया है, सीज़फायर घोषित कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 4 घंटे में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत की गई है। कहा जा सकता है कि पाकिस्तान आपके मानने वाला नहीं है, पाकिस्तान को पाकिस्तान के बताना होगा। कहा जाता है कि सीमाकार याचिका किया गया और छप्पन के जवानों के द्वारा इस मामले में मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो बॉर्डर इलाके विराम की बॉर्डर इलाके पर फिलहाल वहाँ पर बीएसएफ पाकिस्तान के द्वारा बीएसएफ के द्वारा का उल्लंघन किया जा रहा है। जवाब दिया जा रहा है कि पाकिस्तान अगर मानने वाला नहीं है, अगर बात करें पाकिस्तान को पाकिस्तान के लहजे नहीं, उससे पहले इलाके में देखा जाएगा तो चाल चलता दे रहा है। जो राष्ट्रपति मंदिर है उसके सीमा पर फायरिंग का जो वहाँ पर फायरिंग का जो मामला है वो देखा गया के जवानों के द्वारा इस मामले में जवाब दिया जा रहा है।
क्योंकि जो भी बॉर्डर इलाके हैं, बॉर्डर इलाके पर मामले पर देखने को मिल रहे हैं, तैनाती है, जवाब दिया जा रहा है, फायरिंग का उचित जवाब दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर कहा जाए फायरिंग की अगर बात करें तो फायरिंग अभी कुछ दिन पहले इलाके में देखा गया, अटैक करने की कोशिश की जाती है, वैष्णो देवी मंदिर है, ब्लैकआउट की पहले भी ट्रेनिंग दी गई थी और वहाँ पर फायरिंग का जो मामला है वो देखा गया। हालांकि एक कोई सी राहत की बात जरूर कही जाएगी कि जो भी पाकिस्तान हमारे साथ जुड़े हुए थे, फायरिंग के मामले देखने को मिल रहे हैं, ब्लैकआउट कर दिया गया है, जवाब भी दिया जा रहा है। एरिया बॉर्डर से एक और बड़ी खबर मिल रही है, बॉर्डर से सटा हुआ इलाका चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में देखिए जो बॉर्डर एरिया लगता है जब ऐसे अटैक करने की कोशिश की जाती है तो ब्लैकआउट की पहले भी ट्रेनिंग दी गई थी और उन सभी जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। वहाँ भी ब्लैकआउट किया गया है, हमारे साथ जुड़े हुए थे शंकर, वहाँ पर भी काफी सभी जगह पर ब्लैकआउट कर दिया गया है जहाँ पर खतरा ज्यादा है या फिर जो एरिया बॉर्डर से लगते हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए उससे सटा हुआ इलाका चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में उल्लंघन कर दिया है LOC पर पाकिस्तान एक बार फिर से फायरिंग शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर पूर्व में भी ड्रोन हमला हुआ है, मेंढर में राजस्थान का इलाका है, खासतौर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ब्लैकआउट किया गया है जैसलमेर और बाड़मेर में भी, वहाँ पर भी काफी धमाके की आवाज सुनी गई है। सहमति बनी थी पाकिस्तान और भारत में और अब बताया जा रहा है कि LOC पर फायरिंग एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर का यानी उल्लंघन कर दिया है और LOC पर पाकिस्तान एक बार फिर से फायरिंग जिंदर सोडी हमारे Dr. Jaishankar, thank you very much for joining us at the Rising Bharat Summit. You've come here every time we've had a Rising Bharat Summit, so this is your third edition here. But I want to start off with something significant which some of our audiences may also be interested in knowing. It is the number 2,140. Does that hold any special significance for you? I shall enlighten our audience and maybe even enlighten you. That's the number of days that this sounds like one of Elon Musk's That's the number of days he's been External Affairs Minister. He's the longest serving External Affairs Minister of India since Nehru. So we can have a round of applause for that. And what a time to be in charge of India's foreign policy. You look back at the last 5 years and 10 months now, it's going to be almost 6 years. What do you think has been Indian foreign policy's singular achievement in these last 6 years? One thing, if you were to name, with the mic, sir. I would say, this is Bharat rising. So how do you manage the process of rise under extremely turbulent conditions? Because managing a process of rise is tough enough, but countries normally hope that you get a very conducive environment. We've got as tough an environment as anybody could sort of. No, not hope for. Not hope for. Anybody could actually imagine. And I think getting through that. I mean, just look at these last 6 years from a foreign policy perspective. I mean, you've had Ukraine, you've had the Middle East, you've had the whole Indo-Pacific turbulence, you had Afghanistan, you've had Myanmar, you've had COVID, you've had meltdown of various kinds, political changes in our neighbors. Actually the stresses and it's not just change. There've been big events, there've been fractures, there've been stresses, there've been surprises. So it's been as turbulent as it could have been. I do want to, so since you said it's been challenging circumstances, it's beyond what anyone could have imagined. Let's address the elephant in the room, and that is the tariffs that have kicked in today. That's what our business editors have been telling us. The reciprocal tariffs have kicked in today. And first of all, I'd like to understand from you, what is your assessment? What is your reading of, what is going to be the impact of these reciprocal tariffs on India? What is India's strategy to try and deal with the fallout of it? If you could sort of,
elucidate what your views are. I don't think it's possible to speak about what would be the impact because we don't know. What is our strategy? I think that's pretty clear. We decided that we will engage the Trump administration early on this set of issues. We were very open with them, very constructive with them, as they were with us. What we agreed to do was to try to negotiate a bilateral trade agreement by fall of this year. To the best of my knowledge, and I could be corrected here, I think we are the only country after President Trump has assumed presidency the second time, which has actually reached such a understanding in principle. So I don't know, every country, because every country is tariffed, okay? So every country in the world today is fashioning its own strategy of dealing with the United States. In our case, our strategy has a goal, and the goal is to see whether it's possible to actually deal with this situation by concluding a bilateral trade agreement. And I should add that in an interesting way, this has long been our objective. The present situation may have created the circumstances for such a serious conversation. But if you look at President Trump's first term, we were actually negotiating a trade deal which could not fructify. And if one looks even at Biden's administration, we discussed trade possibilities and we ended up with the IPEF initiative. They were very averse to doing a bilateral agreement. So from the Indian perspective, actually doing, working out something bilaterally with the United States is not at all a sort of a negative or a sort of unwanted situation. On the contrary, it is something which has long been our objective. But tell me, Dr. Jaishankar, as you take a moment to drink water, you've been part of many bilateral negotiations, trade negotiations in the past. These things take time. You said we're hopeful that the BTA will be wrapped up by the fall. Two things: what happens if it doesn't, and if it takes longer than that? And two, how confident are you that you can actually wrap it up by the fall? Well, I've always wondered why it takes such a long time. Frankly, I've never figured it out. You tell us. No, I've never figured it out because, I see, we have trade negotiations which have been going on for decades. And the negotiators meet, I think, every 6 months or 3 months or 4 months. And I wonder why. I mean, if I were doing a negotiation, I'd be at it till I got the job done. And I think today, when I look back at the last, since the Prime Minister's visit, I'd say mid-Feb, so we're about 6 weeks since then, we've actually had multiple rounds in this period. I think we've had more periods, discussions with the Americans in the last 6 weeks than I suspect we've had with the Europeans in the last 2 years. Wow. More discussions with the US in the last 6 weeks than what you've had with Europe in 2 years. But you're also sort of accelerating the FTA talks with EU, with UK and so on. Do you think that, this is a 35,000 feet view question, do you reckon that Mr. Trump, by doing what he's doing, is forcing other countries to, start trading more with each other and start, processing these FTAs in a quicker fashion? Look, you are attributing everything in a way to President Trump. Mm-hmm. I understand why. But I want you to look at it for a moment from an Indian perspective. Sure. Okay? Since the beginning of reform, 1990s, in 30 years, what are your FTA agreements? They're largely to the economies east of India, okay, with the ASEAN members, with Japan, with Korea, Australia, which is not the same. Now, where are actually your many of these are competitive economies. Yeah. Okay. In fact,
with most of these countries, we are running today trade deficits. Now, where is the natural growth potential for our exports? It's to the countries west of us. It's in the Gulf, it's in Europe, it's in the UK, it's in the United States, possibly in Latin America. And actually, those are the agreements which have lagged behind. So it's been our endeavor, I can tell you. I mean, from 2014, for example, we've been pressing the Europeans saying, look, can we re-engage, because we had stopped engaging. Then after Brexit, we responded very quickly to the UK's interest in reaching an agreement. And we see an opportunity, I mean, in the current situation vis-a-vis the United States. These are, to me, really the priorities which we should be doing. We should be doing it in our own interest, not because some other president of another country says he's created a situation. I want to talk a little bit about Europe, because you had sort of become a bit of a lightning rod for them about talking about oil imports from Russia, saying, how can you import from a country that's gone into war and invaded and so on? And you've laid out very articulately for India and for the rest of the world what India's position is. Now the same Europeans are scampering for an FTA with India. Do you see a double standard there? Or No. I think you're being unfair to Europe. Yes, you're being unfair to Europe. I think the Europeans were serious about an FTA earlier. It's just we haven't seen that kind of urgency. Maybe the way of working is different. So I can't expect everybody to be the same. So they take, typically they have taken much longer periods between interacting with each other. My point is that, Europe today, I think, realizes the importance of deeper ties with India and the relevance of the FTA for that purpose. We had in the end of February, 21 European commissioners led by President von der Leyen visiting India. Very unique happening. Not just for India, even for them. They don't normally do that. I think there's a very serious message coming out of Europe saying we want to move forward on this. We welcome it, we reciprocate it. And I'm pretty confident that just as we are seeing a very intense engagement with the United States, and by the way, with the UK as well, I expect the pace to pick up with Europe. We have an aspirational goal. We'd like to close out the FTA this year. But, when we get there, we'll see. I want to talk about the neighborhood. Last time you were here at the summit, the big concern, the big talking point was the relationship with China. And you had said that the relationship is not normal. And, we need to deal with the situation at the border for the relationship to become normal. Now, there's been a disengagement process. Prime Minister has met with the Chinese president. You've met with your counterpart, I think, on a couple of occasions since then. How would you describe the state of the relationship with China? How far away from normal is it? Well, it's obviously better than the last time I was here. Sure. I think the disengagement, particularly the Depsang-Demchok, was important. We are now addressing, to some extent, issues on the border because there's been a force build-up over a period of years. But there were many other things which also happened during this period. Some of it was a collateral of the situation. Some of it was actually a carryover from the COVID era. For example, our direct flights stopped during COVID. They were not resumed. The Kailash Mansarovar Yatra stopped during COVID. It did not again resume. So I think there is work to be done. We are at it. We are, sort of trying to see whether a lot of this post-COVID and, parallel to the border tension, the combination of these issues, how much we can progress on this. We are looking at it because at the end of the day, we have always maintained that
the situation which we saw between 2020 and 2024 was not in the interest of either country. It was not in the interest of our relationship. And I think there is a recognition of that now. So it's on the road to being normal again? Well, I think we are moving in a positive direction. The problem with your profession is you want instantaneous transformation. The challenge of my profession is it's a very arduous and painstaking one. I'm glad that we are sticking to each other's respective professions. But, because there's so much talk around trade and because President Trump has made that the point of conversation, you referred to, we have trade imbalances with a lot of countries to the east, right? Is this, you reckon, an opportunity, again, academically speaking, an opportunity for India to look at some of those trade relationships and say that, these imbalances cannot sustain, just like America is saying that, an imbalanced trade relationship is not working for them? Well, we've had concerns. We have articulated those concerns. This is not my direct remit, but I have a visibility into it, and we work as a team within the government. I think one of the issues for us, for example, has been the review of the ASEAN-India Trade in Goods Agreement, ITIGA, which we believe has been unnecessarily prolonged. I think it's important for all countries today to realize that the nature of the global discourse on trade is changing. There are new parameters, there are new metrics of judgment. I think countries will do what they need to do to protect their businesses, to protect their labor, to protect their societies. We cannot be an exception to it. So I think we have concerns with many of the countries east of us, countries with whom we have FTA arrangements, and also countries with whom we don't. Prime Minister was recently at the BIMSTEC summit. You were there with him. It's the first time that he met with the new interim leader of Bangladesh, Professor Yunus. There's been a lot of concerns here in India about some of the statements that have been made by the leadership there, some of the goings-on the ground, whether it's attacks on minorities, so on and so forth. From within whatever you can divulge in the public domain, what did the Prime Minister tell Professor Yunus, particularly on this comment about India's northeast being landlocked and, Bangladesh being the gateway to the ocean, and also on the attacks on minorities, on both those issues? No, look, I think the main messages from our side, which came out at the meeting, one, that our relationship with Bangladesh, for historical reasons, is a very unique relationship. It's a very fundamentally a people-to-people connect, much more so perhaps than any other relationship than I can think of. And that's something we need to recognize. So, it's not necessarily one of the government of the day. Secondly, we have concerns. We have concerns about the rhetoric which is coming out of people in Bangladesh. We have concerns about radicalizing tendencies we see. We have concerns about the attacks on minorities. And I think we were very open about sharing those concerns. Again, as a country which no country wishes Bangladesh well more than us. That's in our, I would say almost in our DNA, if you can say that. And as a well-wisher, as a friend, I think we hope that, they make go the right way and do the right things. And as a country with which has a democratic tradition, democracies require elections. That's how mandates are given and mandates are renewed. So, we hope that they go down that path. From well-wishers to not so well-wishers, I want to talk about Pakistan. Two questions. One, because this news just came this morning, the Tahir Rana, who's the convict in the 26/11 attacks, is likely to be extradited perhaps in the next 24 to 48 hours. So I want your comment on that. And second, this whole thing, Balochistan seems to be in a bit of a flux, and Pakistan has resorted to its old, copybook that, India is doing this, so on and so forth. So on both those issues, I would like your No, there's nothing really new that I can say on the Tahir Rana
issue. I mean, obviously, we welcome the decision of the American legal process. On the Balochistan issue, look, I don't want to say anything. I mean, there is clearly a very disturbed situation there. People are suffering there. And if I say something, there'll be finger pointing. So I don't want to say it. But just on the principle that, every time India says there is terrorism emanating from Pakistan targeting India, you're met with a stone wall. Look, Zaka, I don't have to say it. It's visible. Even they say it. But it's not like I'm making an accusation and everybody in Pakistan is there saying, no, this is completely untrue. You have people in Pakistan who openly declare that they are doing terrorist activities in India. So this is not an argument. I mean, this is not a hypothesis. This is something they proudly claim. So I think, we've always maintained, not just us, I mean, all sensible people have maintained that if you start a terrorism industry, you will be consumed by it. And that is exactly what we are seeing today in Pakistan. So at a time when, there's an acceleration for regional partnerships and so on, you don't see any future for SAARC, given if Pakistan does not change its tack and does not use or employ terror as an instrument of state policy? Well, let me pose that question to you. I mean, would you be okay if we were nice to each other in the morning and I come and attack your house at night? Certainly not. I mean, would you live with it? Certainly not. Then why would you even ask me that question? No, just in the context of SAARC. Let me also come to last few questions. The relationship with Canada. We've had a pretty, certain issues that plague the relationship in the last couple of years. There's going to be an election there soon in the next few weeks. Are you considering reinstating the Indian High Commissioner in Ottawa? Is there anything moving in that direction post the election? Look, again, I'm very cautious in anything I would say publicly about Canada. They're heading for elections. I don't want a remark become an issue out there in their politics. For us, the direction in which ties have gone is something which, again, we believe has not served the interests of Canada. The kind of latitude that was given to people espousing extremism, secessionism, violence, if you import such people and encourage such people, it's going to have consequences in your own landscape. And, what we were saying, in a way, the cautions we were uttering inside the room, unfortunately, played out outside the room as well. So we would like certainly to see, after all, it's a big country, Commonwealth country with whom we've had, generally good relations. Yes, things, again, for almost exactly the same reasons had happened in the 80s. So to the extent that, we see them recognizing the problem and, not giving that kind of political space to such forces, if we would then naturally take that into account. I mean, I have no gain by having bad relations with Canada. I would like them actually, I would like both sides to mend the relationship. But I would also like people to recognize that there's a real problem out there. And the problem is, the kind of space given to these forces. One final question. We're anticipating President Putin of Russia to visit India at some point this year. In this new emerging global order where, President Trump wants to end the war, he's talking directly to both Russia and Ukraine. How does India figure in this emerging matrix? Because India is one of the few countries, yesterday the Prime Minister was here, India is one of the few countries that can speak to both Russia and Ukraine and has good relations with both. We've had a very, I would say, both a sensible position and a helpful position. Sensible in terms of very early on, we took the view publicly that
this conflict cannot be resolved on the battlefield, that it was necessary for a return to dialogue and diplomacy, that it was important for the parties concerned to talk to each other, because that was not happening. And there was actually a view at that time that everybody else would gather together and somehow produce a solution, and the other party, in this case Russia, would be confronted with that as a choice. Now, much of what we held in 2022, 23, 24 has actually come to pass. And there's no vindication in it. I mean, in fact, if anything, there is regret that, so many lives have been lost, so much time has gone, so much damage has been done, not only to the countries, but to the global society and to the international economy. But okay, now there is a greater understanding that we need appreciation, that we need to they need to engage each other. So to the extent we can motivate that, foster that, encourage that, we would do that. And again, I maintain that we've always, what we said in Moscow was not different than what we said in Kiev and what we said in third places. And we've tried to, have conversations here, take those there with the approval of each party. And so that's one part of what we've tried to do. The other is, there have been different dimensions of this conflict which have popped up from time to time. Different countries have weighed in, and I think it's such a really serious issue. It's natural. It's not a single or a small number of countries. We approve of all of that. I think anything which any country can do or any group of countries can do to help, we welcome that. We've tried to do a few things ourselves. We weighed in with other people. It could be some of the nuclear-related issues, or it could be grain corridor, or whatever it is. But the objective is to help. The objective is not to put yourself ahead. I mean, we're not, actively searching for a role. But if, either of the parties or any other country comes and says, look, can you help out on this? We'd be open to doing it. All right, and I'll wrap up. I know you like cricket a lot. So these 2,140 days as the longest serving foreign minister post Nehru, you look at it as a test match, as a T20, as a one-dayer, or this is your career with an asterisk, not out. S. Jaishankar batting at 2-1-4-0, not out. No, I think on this one, look, it's been, again, it's been a very interesting heading to 6 years as foreign minister, but I treat it to some degree as a continuum of what I was doing earlier. In a way, I think the next few years will be extraordinarily challenging. It'll be challenging for the world. It'll be challenging for us as a country, precisely because we have to keep rising through all this clutter, through all these tensions. And to be associated with that process, to be given responsibility of that process, I think is a great honor. It's a great responsibility. And I'm very, very, grateful for it. We have the best batsman batting at not out on that. Thank you very much, ladies and gentlemen. Dr. S. Jaishankar, the External Affairs Minister. Thank you, Parikshit. Hello to all of you again. Our session today, this session is called The Geopolitical Calculus, the India Theorem, where we shall examine India's evolving role in global affairs. The international order is growing more complex by the day. It is becoming more multipolar. And India stands at a unique crossroads. We are strategically autonomous, economically ambitious, and increasingly influential. So in this conversation, we hope to unpack India's moves and try and figure out what it reveals about the shifting global order. Dr. Abrams, it's a pleasure to have you here. Great to be here.
What, according to you, is the India theorem? How do you see India balancing politics, power, pragmatism, and principle in foreign policy? Sure. I think that principle and power is a really good place to start in terms of understanding the nature of U.S. relations with India. I think that the United States is very sort of hot on India, if you will, very close with India because of our shared principle, because of democracy. India is the largest democracy in the world, but also increasingly important because of its power. And we've already seen many speakers talk about the nature of that power in terms of India's economic power and its demographic power. But particularly now from the US strategic perspective, India is seen as critical in terms of its power for containing China. And so this administration, although in a way it's all over the place, with the tariffs and the Ukraine war and Hamas and Iran and the Houthis, there's no issue geopolitically of greater concern to this administration than the rise and potential threat of China. And to that end, relations with India are seen as of paramount importance. We also see that more specifically in the so-called Quad relationship. Yes, but the 26% tariffs does not look like a particularly friendly gesture for a country that is so important to Washington, according to you. We see this all over the place. For example, Turkey had, their tariff was raised to 10%, and there are increasing US concerns about Turkey's role in the Levant. By contrast, Israel's tariff was raised to 17%. So Israel's tariffs were raised more than Turkey's. The difference between Taiwan and China is relatively small, even though the US views China as an adversary and Taiwan as a critical component against China. So you are right that the tariffs are not based seemingly on Washington's geopolitical love. Yeah, and the memes last week were that Donald Trump has taxed the penguins, but not Putin. And so the world is still trying to make sense of what this tariff game is. And what is the end game here? Is it just to reduce the trade deficit? Are you trying to really impose reciprocal tariffs, in which case it has been a kind reciprocity, as the president put it? So what is the US president trying to achieve? I do think deficits are a big part of this, but more interestingly, the United States sees its role as changing in the world. A lot of the international economic system was created by the United States after World War II. And the idea was that the United States was essentially going to underwrite the international economic system. The United States was first in a condition of bipolarity against the Soviet Union during the Cold War. And then when the Cold War ended, the US pursued a strategy of primacy to maintain its unipolar position around the world. But increasingly, there's a sense that this unipolar world is ended, or probably more accurately, it has already ended. It's not just ending, but it has ended. And so the United States needs to assume a different position in the world. It can no longer reasonably afford to, have trade imbalances and have a situation where there aren't high tariffs selling into the United States, but in terms of our exports, there are high tariffs. So
So part of it has to do with the deficit. Part of it has to do with the United States envisioning its role on the world stage differently. But I also think that there's an important domestic politics component to it. You know, the MAGA movement, which helped to elect Donald Trump, many of these voters, they feel like globalization hasn't been good to them. You know, that there are all these billionaires, but they are not really accruing in the financial benefits, especially after the Biden years when there was, you know, runaway inflation, and yet their income really didn't go up all that much. And so there's this idea that perhaps globalization hasn't been great for the so-called everyday American, in that we need more sort of manufacturing happening inside the United States. I'm not saying that I endorse that view, but it is an important one to understand Donald Trump's economic policies. Yes, because economists clearly do not understand what he's trying to do. And there are protests in the US and people apparently cannot afford eggs for Easter and so on. But focusing on India at the moment, what does it mean for India at a time when it is trying to position itself as a manufacturing hub in a post-China recalibration? Do you see this as an opportunity for India for self-reliance or maybe deeper South-South trade partnerships? It probably will have a good effect by showing that, you know, the United States cannot 100% be relied upon as a pillar, and that this will actually induce American allies to become more autonomous, to diversify their economic relations. But I do think that India is in a very good position to accelerate the strong bilateral relationship with the United States. I'm sure you've seen some of the headlines, but my understanding is that the US and India are not going to let, you know, this tariff conversation over the past couple weeks derail their relationship, and they are going to find some kind of a bilateral solution, which actually could put the US and India on stronger relations economically relative to other relationships that the United States has around the world. It does seem that, in my opinion, the best approach is for countries to say to the Trump administration that they understand and that they want to work out some kind of a mutually beneficial relationship rather than reverting to some kind of a reciprocal punishment. Netanyahu, you know, the head of Israel, was just at the White House, and that was basically his approach, that he understood what Trump was doing, and that because of the importance of that relationship, he's going to try to find a way to make moves which will, you know, make both sides happy. I think that is the best approach, because the truth is it seems to me that Donald Trump does place a lot of weight on personal relationships. And so to the extent that those personal relationships can be fostered in a beneficial way, I do think that it could have important financial implications for the rest of us. You're saying the best policy is for world leaders to try and woo Trump. Where does that leave multilateral institutions? Is this the end of multilateralism and globalization? Some countries are looking to go to the WTO, but it may take years for any sort of resolution there. You know, it is true that this administration, I think, places less emphasis on international institutions and multilateralism. It tends to view relationships as transactional rather than sort of ideological or necessarily enduring. And so I do think that multilateralism will still be a factor to the extent that it's seen by Washington as expedient. But to the extent that it's not, I don't think that this administration is going to be paying much lip service to it. That's very different
than the Biden administration, which viewed some of these international institutions as sacrosanct. Right. How do you see India's position on the wars in Gaza and Ukraine? There was a fair bit of lecturing and virtue signaling from the West, a lot of pressure as well, as India tried to prioritize its national interest and old relationships over headline-grabbing statements. But in hindsight and over the years, do you think that this was actually mature diplomacy? So much to say on this topic, but you know, I come to India pretty regularly and do a lot of interaction with India, and a lot of people ask me like, well, you know, why is that? You know, because you're mostly known as like a counterterrorism guy in the security space. And one of the things that I really like about India, which other people might not bring up, is that India takes counterterrorism very seriously. It has a very good understanding of the dangers of terrorism and the importance of combating it. It is certainly true that India tries to be more, quote unquote, even-handed on the Israeli-Palestinian conflict than, say, the Trump administration, which is unabashedly pro-Israel. Yeah. There's no doubt that that's true. But at the same time, I think that from the vantage of Jerusalem, that New Delhi is seen as a very reliable and strong partner. And that's because of their mutual understanding about the importance of counterterrorism. I believe that Modi reached out to Netanyahu very shortly after the 10/7 Hamas massacre. And certain, you know, Israel is a very small country, and India is a very big country. And from Israel's perspective, that bilateral relationship is extraordinarily important. How does the West see India's focus on multilateral groups like the Quad or the SC or the BRICS? Do they see it as a form of hedging or bandwagoning, or do they see it as a genuine attempt to build a multilateral global order? I think that the United States has been deeply influenced by an intellectual paradigm in international relations called realism, which tends to really emphasize sort of, you know, realpolitik and great power politics. And to that end, the United States is very concerned about the rise of China, not only China becoming a regional hegemon, but essentially challenging the United States' primacy around the world. Realism also tends to emphasize that there are very real limits on how much power projection any one country can do, and that, you know, the US economy, although big, is actually finite. And so these multilateral institutions, especially like the Quad, are seen as really important for the United States containing China, but not doing it alone, doing it with allies, which is much more sustainable economically. But they don't like BRICS. I'm sorry? They're good with Quad, but they don't like BRICS. I mean, I just happen to know more about the international security space, and I do think it is of a greater priority to the Pentagon. How do you assess India's deterrence posture vis-a-vis Pakistan and China at a time when, the nature of conflict is evolving? We're talking about hybrid conflict doctrines and limited war. How do you see India positioned against its two neighbors? I wish we had another analyst up here who was really sort of a Pakistan expert in particular. But I do think that India really prioritizes counterterrorism. There's an interesting new development, which I don't want to go on record and sort of ratify it, but based on news stories over the past 24 hours, maybe you have seen them, is that the United States is returning to Bagram Air Base. Have you seen this? Yes. Can you confirm? So
it hasn't been formally announced by I saw some reports. either the Taliban or Washington, but this is a really sort of fascinating development. You know, post 9/11, the United States goes into Afghanistan, tries to occupy the country for 2 decades, finally leaves, and now, interestingly, is returning. And I think that it has to do with not so much the counterterrorism threat. In fact, I believe that the Taliban has invited the Pentagon in. It's not against the wishes of the Taliban, but if you look at where the Bagram Air Base is, it is very conveniently located in terms of dealing with Iran, in terms of dealing with China. And I do think that this is kind of a microcosm of the geopolitical changes that we're seeing, where the United States, of course, post 9/11 was most interested in the war on terrorism. Right. And now the United States has chosen to go back to Bagram Air Base, not primarily for counterterrorism, although it will, be fighting, hopefully with the Taliban against the Islamic State province there, but primarily in terms of dealing with the Iranian threat. Right, And I know and that's an interesting. The reason why I say that is because I know that this is an issue that is of regional importance to India as well. Absolutely, and we see how the conversation on that front is going. Final question, we have a minute and a half. I want to ask you this. There's been another report of Trump announcing a $1 trillion defense budget. What does it say about the president's priorities? Well, like many politicians, I think that Trump has goals which in some ways can be inconsistent. And one of them is reducing the deficit. But Trump also sees himself as, a really sort of iconic figure in terms of the United States' role around the world. So there isn't actually that much sort of energy in reducing the US's expenditure on the military, but at the same time, one of the biggest stories so far in this administration has been DOGE, right? And sort of cost cutting by Elon Musk. The reality is that although I support the cost cutting and many of the expenditures were on all sorts of nonsense, some of those cuts, if you look at them numerically, are actually quite small compared to, say, the cost of an aircraft carrier, or the cost of a bomber. So I think that Washington is trying to reduce its budget, but doing so in a way which will not diminish its military. More noise, less substance so far. Thank you, Dr. Max Abrams, for your thoughts and for your insights. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Max and Palki, for that very interesting session on geopolitics and the divide in the world today. Now, ladies and gentlemen, let's now shift focus to another aspect of geopolitics, oil and gas. As we know, energy security is a critical aspect of any nation's growth and development, and India is really no exception. With our growing economy and increasing energy demands, we need to think strategically. Over the last few years, India has been making innovative and bold geostrategic moves on the oil front. We are also increasing our crude oil suppliers, adding new countries, and diversifying our energy mix. So what does this really mean for a young India? How can our youth tap into these opportunities and contribute to our country's energy future? These are just some of the questions we will be exploring in the next session with Hardeep Singh Puri, Honorable Union Minister for Petroleum and Natural Gas. He will be in a fireside chat on how. When it comes to the question of economy, which is going to benefit everybody, the politics cannot be so disruptive. Once upon a time, Prime Minister Rajiv Gandhi said, if I send 1 rupee to the beneficiary, he ends up getting only 15 paisa. Adopting technology, prime ministers ensure that that kind of leakage doesn't happen.
1 rupee sent is 1 rupee received. So one of the most crucial ministries in Modi's cabinet, the Ministry of Finance, has been entrusted to Nirmala Sitharaman. She is one of the top ministers in the government of India. So only 1.5% of India's population is the tax-paying population, whereas for China, this is 10%, and in the US, it is 43%. Ma'am, why is our tax base so small? As long as you are earning more, you and your family are happy. But the moment you are under the tax net, you think the government is regressive. There are states like Tamil Nadu which were protesting because they were saying that it's like penalizing the states for investing so much money into building factories when there are states that are just consuming States is things. not building factories. What are you saying? The top 1% of India accounted for 45% of all flights, and just 6.5% of the users were responsible for 44% of all UPI transactions. Ma'am, why is the gap between the rich and the poor increasing so much? Ma'am, the Skill India report says that more than 35% of our BTech students are unemployable, 30% of our MBA students are unemployable, 60% of our ITI students are unemployable, and more than 75% of our polytechnic students are unemployable. The Finance Minister of Kerala, K.N. Balgopal, argues, he says that Kerala gets only 21 rupees against every 100 rupee that Kerala collects. But for UP, this number is 46 out of 100. And for Bihar, it's drastically high. Bihar gets 70 rupees out of the 100 rupee that it collects. And here's where the North-South divide narrative comes into play, ma'am. So, ma'am, what is the logic behind dividing this pool of money? I think this narrative is somewhat distorted. Hi, everybody. This is a conversation that I